Hello everyone, welcome to my channel. Today we discuss the topic alkaline phosphates. Alkaline phosphates is also called ALP. So first start with introduction of alkaline phosphate. ALP stand for alkaline phosphate. ALP stand करता है alkaline phosphate. It is an enzyme that hydrolyzes a large variety of organic phosphate esters and produces an alcohol and a phosphate ion under alkaline condition. So एक एंजाइम है जो हाइड्रोलाइज करता है लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फेट ईस्टर्स को और प्रोड्यूस करता है एन अल्कोहल एंड अ फॉस्फेट आयन अंडर अल्कलाइन कंडीशन में. In humans, it is present in all tissues throughout the entire body, but higher concentration is found in the liver, bone, bile duct, kidney and placenta. So in humans में ये present होता है in all tissues throughout the entire body, but जो इसकी higher concentration है वो कहाँ मिलती है? Liver, bone, bile duct, kidney and placenta में. It plays an important role in metabolism and development of bonds. तो ये रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट इन मेटाबॉलिज्म और डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड्स में. इट आल्सो प्ले अ रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए विद इन द सेल. तो सेल के अंदर डीएनए की और प्रोटीन की सिंथेसिस में भी ये रोल प्ले करता है. सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट. सो जो अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट है ये पार्ट है लीवर फंक्शन टेस्ट का, बट it also act as a biomarker of bone disorder, bile duct obstruction and congestive heart failure. So ये biomarker act करता है for bone disorder, bile duct obstruction and congestive heart failure. Next is estimation of ALP. Name of method para-nitrophenyl phosphate method, PNP. Para-nitrophenyl phosphate method is also called PNP method. Next principle. In this method, working reagent contains 4-nitrophenyl phosphate which act as a substrate. So इस method में जो working reagent है वो contains करते हैं 4-nitrophenyl phosphate जो act करते हैं as a substrate. ALP present in the serum sample catalyzes the substrate and produces 4-nitrophenol and phosphate at the alkaline pH. So जो ALP present है serum sample में वो कैटालाइज करेगा सबस्ट्रेट को और प्रोड्यूस करेगा 4-nitrophenol एंड फोस्फेट एट द अल्कलाइन पीएच. द AMP is 2-amino-2-methyl 1-propanol buffer reagent contains optimized concentration of zinc and magnesium ion which activate the alkaline phosphate in the sample. So जो AMP buffer reagent है वो क्या कंटेन करता है? ऑप्टिमाइज कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक एंड मैग्नीशियम आयंस को which एक्टिवेट करते हैं alkaline phosphate को in the sample. These metal ions can also chelate other potentially inhibitory ions which may be present in the serum. So जो metal ions है ये चिलेट करते हैं, चिलेट मीन्स ग्रैब करते हैं other potentially inhibitory ions को जो प्रेजेंट होते हैं सीरम में. The intensity of yellow color is directly proportional to the ALP activity in the serum. So जो yellow color है उसकी intensity directly proportional है to the ALP activity in the serum. The color intensity is measured by the colorimeter at 405 or 415 nanometer. Next is requirements: test tube stand, serological pipettes, water bath, colorimeter, reagent test kit, etc. Reagents. The estimation kit has 3 reagents: AMP buffer solution, substrate solution, p-nitrophenyl standard solution. Next procedure: take a test tube stand and place 3 clean and dry test tubes. Label the tubes as test, standard and blank. Pipette in the labeled tube as follows. Next, this is a table. Reagent sample, test tube, standard tube and blank tube. So first reagent is AMP buffer solution 0.8 ml in all the tubes. Next serum sample 0.02 ml in test tube, 0.02 standard reagent in test tube, 0.02 distilled water in blank tube. Mix well and incubate at 37 degrees Celsius for 5 minutes. Then substrate solution 0.2 ml in all the tubes. Then mix well, incubate at 37 degrees Celsius for 1 minute.
Measure and note the color intensity of the test and standard against blank at 405 or 415 nanometer. Next is calculation. ALP, international units per liter. Reading of test upon reading of standard multiply concentration of standard. Next is clinical significance of ALP, alkaline phosphate. Serum ALP level is a biomarker of hepatobiliary disorder and bone disease. So ये biomarker है bone disease का और hepatobiliary disorder का. Most of the ALP in the adult serum is from the liver और biliary tract. जो most of the जो कहते हैं ALP होता है adult serum में कहाँ से होता है liver और biliary tract से. Normal ALP levels are age dependent and levels are elevated during periods of active bone growth. So जो नॉर्मल ALP सीरम लेवल है वो एज डिपेंडेंट है और जो लेवल एलिवेटेड होते हैं वो किस पीरियड में होते हैं, एक्टिव बोन ग्रोथ के पीरियड में. ALP एक्टिविटी इज रेज्ड इन लीवर डिसऑर्डर्स इन्वॉल्विंग द बिलियरी ट्रैक सच एज हेपेटाइटिस, स्पेस ऑक्यूपाइंग लेसन्स एंड मैलिगेंसी ऑफ लीवर. सो जो ALP एक्टिविटी है वो रेस होती है इन लीवर डिसऑर्डर में. इसमें क्या इन्वॉल्व है, बिलियरी ट्रैक सच एज जैसे हेपेटाइटिस, स्पेस ऑक्यूपाइंग लेसन्स हो गया, मैलिगेंसी ऑफ लीवर हो गया. इट इज आल्सो इंक्रीज इन ऑल बोन डिसऑर्डर्स. Moderate elevation of ALP may be attributed to congestive heart failure, abdominal bacterial infections and pregnancy. Or low level are found in dwarfism, hypothyroidism and pernicious anemia. So this is all about the alkaline phosphate method. Please subscribe, like, share and comment on my channel. Thanks for watching.